तो रिकॉर्डिंग हो गई है. सो जस्ट टू रिवाइज, वी हैव लर्न हाउ डू यू इंस्टॉल LT Spice. You go to basically, you can just type in, let me just write this. You can just type in over here कि LT Spice download. And Analog Devices is the basically manufacturer right now, is the owner of LT Spice. ठीक है. It was called before Linear Technology. तो अब it is basically under ownership of Analog Devices, right? यहाँ पे जाके you can easily download the software. Uh, it isn't a heavy software. If you can just go to your control panel and you can see the size of the software also. कितना है. ठीक है. Control panel. So even if you have a decent laptop, right? So it would work fine. Let me just go here. इसमें size define होगा. तो it's just 152 MB. ठीक है. इसके अंदर इसका स्पेस भी होगा जो मैं सिमुलेशन ऑलरेडी करी हुई है. ठीक है. So this is about the installation, and let's go towards the interface now. So this is the first screen which you will hit, right, when you enter LT Spice. I would say you should follow the steps जो मैं कर रहा हूँ ताकि you can get an idea about how do we navigate entire thing, right? It's pretty good if you know LT Spice when you go into professional life, right? P Spice वो prefer नहीं करते because उसके अंदर we have limitations. What is the limitation in P Spice? हाँ तो Spice और हाँ इस ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेसिंग में नहीं आता. ठीक है. एंड सिंप्लिसिटी ज़्यादा नहीं है. इफ़ यू हैव लर्न द सॉफ्टवेयर इट्स इजी टू नेविगेट, बट इफ़ यू हैवन लर्नड हाउ टू यूज द सॉफ्टवेयर इट्स डिफिकल्ट, राइट? बट दिस सॉफ्टवेयर डिजाइंड फॉर starters also. You can easily navigate through it. You have some shortcuts if you want to speed up your uh, progress. ठीक है. So this is the first screen which you hit over here. You can see multiple options on your main page. You can see file. यहाँ पे you have multiple options कि you want to create a new file. ठीक है. तो if you want to create a new file from a shortcut, that is Control plus N. ठीक है. So if you hit Control N, you create a new schematic by default. ठीक है. New symbol. Let's say if you have a Spice code right now open on your interface, you can easily click new symbol. So it will make a new symbol, right? So you can even design your own IC. ठीक है. From the Spice code. If you have the Spice code, if you want to use that particular Spice code as a symbol, as a sort of a IC device, you can easily make it on your own. ठीक है. We'll see in this lecture कैसे करते हैं, right? Then you have open. Just if you have a file already created, if you want to open the file, you can hit Control O, or you can navigate through here. ठीक है. Go to file, then open a file, right? Open examples. You have built-in examples over here that you can navigate. ठीक है. So if you hit the example over here, you can see we have some built-in examples by the LT Spice company. Applications, you have some second order all pass, second order band pass, some IC's example over here, right? And multiple examples. If you can scroll down, you can see multiple examples over here. जिसके सर्किटरी बनी बनाए होंगे इनके पास. ठीक है. So you have comparators examples, you have op-amp examples over here. You might have MOSFET example also. हाँ. ठीक है. So you have multiple examples over here which in which they have used certain particular IC जो इन लोगों ने available की हुई है उनके पास to use, right? अच्छा, in their library you have the ICs which are manufactured by Analog Devices, right? And some of them are Max devices, right? Max भी available होती है locally. ठीक है. Then you have educational examples over here. ठीक है. Some Butterworth filter over here, some Howland. ठीक है. जिसको खोल लेते हैं. तो you have create automatically created examples over here, right? So इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्री भी दी हुई है कि यहाँ पे जाके कैन एक्सप्लोर कि हमने क्या बनाया हुआ है, right? So on and so forth. I don't know what have they made over here. ठीक है. अभी एग्जाम्पल नहीं, मुझे आइडिया नहीं. ओके. सो अच्छा, हाउ डू यू क्लोज समथिंग विच इज ओपन? यू कैन सी अ स्मॉल क्रॉस बार हियर, राइट? फिर क्लोज है तो बंद हो जाएगा. ठीक है. उसके अलावा फाइल के अंदर क्या ऑप्शंस है हमारे पास? यू कैन ऑल्सो import libraries here, right? You can also print the setup. Just hit Control P. It will give you a printed form of your schematic or your entire result, right? Print monochrome. ठीक है. सिंगल कलर कलर्स प्रिंट करेगा ये. And these are your past sort of circuitry schematic which you have created, right? Recent.
वांट टू एग्जिट, क्लियर एग्जिट, ये बंद कर दिया उसको। ठीक है। तो दीज आर द बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ योर फायर एक्सप्लोरर हियर। ये ठीक है, सिंपल हुआ है। वेयर इज मल्टी स्पाइस, वेयर इज मल्टी स्पाइस। Okay, so apart from this, you have some view options here. Status, toolbar. Do you want to show toolbar? बंद कर दें तो ये toolbar खत्म हो जाएगा, right? So on the top you have your toolbar, right? So if you want to keep your toolbar on your top, press show it to me. ठीक है. What is status bar? If you close it, on the bottom you see status, right? If you just see on the bottom, you can see something here, right? Okay, if your simulation is running over here, we show कि how much time has elapsed, right? How much time is remaining. So सारा नीचे आ रहा होता है, ठीक है? Bottom is your what? स्टेटस बार ही है। व्हाट आर विंडोज टैब्स, इसको बंद करें। एक मिनट रुकें, एक मिनट रुकें, एक मिनट रुकें, ये क्या हो गया? अच्छा, आई गेस इट बेसिकली शोज कि इफ यू हैव मल्टीपल विंडोज ओपन टुगेदर ओवर हियर, लेट्स से यहाँ पे जो लिखा हुआ आता है, इफ कंट्रोल एन का दबा दूं मैं, वो है ना, राइट? सो इफ यू प्रेस दिस, एक मिनट हो गया, डज इट डू समथिंग? हाँ, तो लेट मी जस्ट डू मल्टीपल टैब्स हियर, ठीक है? सो आई हैव मल्टीपल टैब्स हियर नाउ, लेट्स सी व्हाट डज इट डू। हाँ, तो बेसिकली इट्स बेसिकली remove all the drafts, basic schematic which are already open in your Spice, right? So if you want to cross it out, this small top right corner पे इसको cross कर दें, ठीक है? Do it multiple times, you have multiple files open, ठीक है? Then what do you have? Then you have tools, right? And from here you can change, make some changes to your components, right? कि अपडेट कंपोनेंट्स, इसकी डायरेक्टरी चेंज करनी है आपने, कि लेट से मैंने इसका लाइब्रेरी फाइल मैंने अलग जगह पे लेके चला गया, तो उसको चेंज कर दें। इफ यू हिट सेटिंग्स यू सी डिफरेंट ऑप्शंस हियर, ठीक है? नेट लिस्ट ऑप्शन अभी इसको छोड़ दें, आप स्कीमेटिक के अंदर आप आएंगे तो यू विल सी के यू कैन मेक सम चेंजेस ओवर हियर डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, राइट? कि स्क्रॉल व्यू हो गया, आई कैन यूज योर माउस पैड टू बेसिकली गो अप एंड डाउन, यू कैन जूम इन फ्रॉम योर माउस ओवर हियर, राइट? So there are some basic schematic settings over here. Compression के if you want to reduce the size of your files, ठीक है, so on and so forth. Waveforms की width आ गई है कि trace की width कैसी हो आपके पास, right? Cursor का size क्या हो, font size क्या हो, so on and so forth. Then if you go to search path के it will basically tell you कि what directory it will save your libraries at, ठीक है? कहाँ से import करी libraries? Does it ask us can we save from when? हाँ, तो इफ यू डू जस्ट कंट्रोल एस इट विल सेव डायरेक्टली टू इट्स डिफॉल्ट डायरेक्टरी, जो उसके डाउनलोड्स पे होती है ना, कि डाउनलोड्स में फोल्डर ऑफ एलटी स्पाइस, वहाँ सेव हो जाएंगी। वांट टू डू सेव एज, यू कैन डिफाइन योर डायरेक्टरी कि हाँ सेव करें, ठीक है? That we do from. या यू कैन डू इट फ्रॉम हियर, विल सी। इंटरनेट का हो गया यहाँ पे कि वेबसाइट कौन सी यूज़ करनी है फॉर इम्पोर्टिंग मोर ऐसी, इफ यू वांट टू गेट अ न्यू ऐसी, कि हाउ डू यू, वेयर डू यू फ्रॉम बेसिक इम्पोर्ट इट फ्रॉम, राइट? सेव डिफॉल्ट यहाँ पे आ गए, राइट? कि आपने क्या क्या सेव करना है, करंट सेव करना है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। When you run your file ना, so you get extra files also saved, dot log files, उसके अंदर your data, ठीक है? The simulation data which you basically run, you will see in a while कैसे आता है। So these are your basic settings over here। अच्छा, colors में this is pretty important over here to get uh, good contrast of your waveforms। So I would prefer कि आप go to your waveform settings जल्दी से, and जो you will hit the first option of waveform, right? उसके अंदर जाके बैकग्राउंड को कर दो white, ठीक है? Background white. हाँ, तो जस्ट सेलेक्ट आइटम्स, बैकग्राउंड लेके आओ उसको, ब्रिंग बैकग्राउंड इन योर सेलेक्टेड आइटम्स एंड मेक इट वाइट, ठीक है? दैट इज मेक ऑल द कलर्स हाई, RGB, एंड अप्लाई, ठीक है? हो गया आपका? Hmm. नाउ यू कैन बेसिकली ऑल्सो सेलेक्ट द कलर फॉर योर ग्रिड, जो बैक एंड पे शो होती है, मेक इट ब्लैक so you can see prominent dots, ठीक है? एंड अप्लाई ऑन योर ग्रिड, डन।
यू कैन ऑल्सो चेंज कलर के एक्सिस हो गया जो एक्टिवेट हो गया हमारे पास, उसका कलर क्या हो, ये तो बाय डिफॉल्ट है तो इट्स ग्रेज कलर. So you can also change the color for trace one. Okay, I want the trace one to be green, red, whatever you want, right? So I would say it is not important to change this. If you want to change, you can change, right? You can see that V1 with the plot one would be green, plot two would be blue, plot three would be red, plot four would be sort of cayenne color over here, light blue. ठीक है. So all the colors of your waveforms, let's say plot one, two, three, four are playing on your top screen. ठीक है, you can tweak them if you want to. If you're done here, you can go to your schematic on your top. So these are some navigation, right? How can you tweak your colors? Make sense? अच्छा, अब यहाँ पे you can see multiple things here. You have wires, junctions, component body. ठीक है. So wires को black color is more suitable over here. So make the wires color to be black and hit apply. ठीक है. Then you can go towards junctions. Junctions क्या होते हैं basically? जहाँ connection आपके dots बनते हैं ना, कि if you connect multiple wires to a point over here, तो what color you want to show कि these points are junctions, right? They're not basically free wires. So यहाँ पे by default blue होता है, it's fine. ठीक है, you can see blue dots here. Then you have component bodies. ठीक है, उसको आप कर दें, I would say that is fine. Make it black. Either way, you By make. default, it's 127 mode blue. हाँ. So whatever you want, ठीक है, this is not important ज़्यादा. ग्राफिक फ्लैग छोड़ दें, उसको कंपोनेंट फिलिंग छोड़ दें, कंपोनेंट टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक ही होगा, सही है. एंड देन स्पाइस डायरेक्टिव टेक्स्ट भी ब्लैक है, दैट्स फाइन. Because these simulation will go into your report, right? They want the simulation results to be fine. अच्छा, कंपोनेंट टेक्स्ट ये आपका पर आ रहा है, इट्स बेसिकली डार्क ब्लू है. सो इफ आई जूम आउट, मेक इट ब्लैक ऑल्सो. एंड बैकग्राउंड तो हमने इसको वाइट ही किया हुआ है, ठीक है. सो इफ यू आर डन विद दी सेटिंग्स, हिट नेक्स्ट. Capacitor, the other. लेट मी गो हियर. इट्स द हाईलाइट कलर. इफ यू क्लिक एनी कंपोनेंट, क्या कलर आएगा? ठीक है, कि मेक इट रेड. ठीक है, वट एवर यू वांट. जस्ट इट शुड बी विजिबल कि आपको सेलेक्ट किया, राइट? सो इफ यू डन विद दी सेटिंग्स, यू कैन गो टुवर्ड्स नेट लिस्ट. नेट लिस्ट क्या होती है? इट्स द स्पाइस कोड, राइट? विच यू विल नॉट एक्सप्लोर इन डिटेल, सो उसको छोड़ देना. ठीक है. सो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर कि स्पाइस कोड ऐसे दिखता है आपको, ठीक है, कैन सी के इस सॉर्ट ऑफ अ स्पाइस कोड. दे आर इंजीनियर्स हु आर राइटिंग स्पाइस कोड फॉर द आईसीस, राइट? So we explore one of the example at the end, क्या होता है. ठीक है. डन टिल हियर. Mhm. प्रेस अप्लाई. ओके. ओके. ठीक है, छोड़ना इसको. इफ यू वांट टू गेट सम हेल्प कि आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, प्रेस हेल्प, राइट? यहाँ पे आपको बता देगा F1. तो it will take you to our वेबसाइट. ठीक है, you can navigate over there, right? कीबोर्ड शॉर्टकट चीट कीज. ठीक है, कि हाउ डू यू ब्रिंग इन सैम्पल्स हियर. You can, we will learn some today. ठीक है, you want to learn more, you can learn from here, right? Examples, support analog website for getting ICs for examples, right? लॉग क्या होता है? बेसिकली बैक एंड पे क्या चल रहा है, कहाँ पे एरर्स आए हैं, क्या वार्निंग्स आ रही है हमारे पास, राइट? वो कैन चेक इट फ्रॉम हियर. अपडेट चेक करनी है, ठीक है, एंड अबाउट द सॉफ्टवेयर. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मेन इंटरफेस हियर, राइट? सो इफ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू स्कीमेटिक, हिट कंट्रोल एन. सो दिस इज योर न्यू स्कीमेटिक. ठीक है, द फर्स्ट एवर स्कीमेटिक हियर. तो अब एज ऐसा सेट कि सर वेयर डू यू सेव इट, यू कैन सेव इट इन योर ओन फोल्डर. गो टू फाइल, प्रेस सेव एज. सो मैंने फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है, दैट इज समर के अंदर, जून के अंदर, एल टी स्पाइस, राइट? तो कैन जस्ट सेव इट एज माई फर्स्ट एवर एल टी स्पाइस स्कीमेटिक. अच्छा, आई फॉरगॉट टू ऐड. अच्छा, इसका जो होता है फॉर्म, सॉर्ट ऑफ द एक्सटेंशन इज डॉट ए एस सी. ठीक है, स्कीमेटिक का जो होता है एक्सटेंशन इज डॉट ए एस सी. अब नाउ यू हैव योर ब्लैंक
sort of palette over here to draw and do some schematic here, right? So you can see some options here on your top side over here. That is the toolbar. You can see that is for new schematic here, the first option. Okay. This is open folder here, right? This is saving option here. So you have some shortcuts also defined here, right? इसके साथ ही. For new schematic, you have Control N. For opening a folder, you have Control O. For saving is Control S. For printing is Control P. And this is for what type of analysis you want to have. Transient simulation, steady state simulation, ठीक है? So देख लेते हैं क्या option है हमारे पास. So you have AC sweep, you have DC sweep, everything which was in PSpice it's here, right? So मजे की बात ये है कि इसके ये शॉर्टकट्स कि जस्ट राइट डॉट एंड इट पॉप्स अप. ठीक है. यू प्रेस बेसिकली डॉट हियर, you simply define your type of analysis. If I write dot tran one, right? So it's a transient simulation for 1 second. ठीक है. अब if you want to check कि मेरी सही select हुई है नहीं हुई है, can basically click here. It will define कि आपने transient simulation की थी, right, for 1 second here. ठीक है. If you want to add time step, what is time step, Asad? टाइम स्टेप हाँ. किसी वैल्यू डाटा सेव करना शुरू करें. और basically it is the time for the next sample to pass, right? Simulation का होता है ना. In PSpice also used to have step time, right? MATLAB also. So if you have very small step size, that means that it is going to take more time, right? So you want to basically decide a suitable step size. If you don't define any step size, it choose automatically, right? Make sense? So यहाँ पे you have this benefit here. So यहाँ पे you can define the time to start saving data. You have done this in EC2, I guess. Okay, we learned some method in which after certain time starts to save data, right? To save memory. So can also basically होता है क्या? Let's say you have a simulation running for 5 seconds, right? For 2 seconds it is in transient mode. ठीक है. After 2 seconds it hits the steady state mode. At that value you want to basically see the waveform, right? So you can basically just define के start saving data after 1.5 seconds. वो पहला का डेटा आपको दिखाएगा नहीं. मेक सेंस. ठीक है. एंड दिस इज द मैक्सिमम टाइम स्टेप, दैट इज के फॉर द नेक्स्ट सिमुलेशन स्टेप हाउ मेनी सेकेंड शुड वेट फॉर. मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर सिमुलेशन राइट नाउ. ठीक है, क्या चल रही है आपकी. देन यू हैव एसी एनालिसिस. ठीक है. इसके अंदर वी हैव टाइप into octave, decade, linear, list. So we have done linear in your past courses right now. ठीक है. एंड देन वी हैव डीसी स्वीप. ये सब कर चुके हो आप लोग. ठीक है. कि आपने एक डीसी सोर्स को आपने स्वीप करना है फ्रॉम मल्टीपल वोल्टेजेस, राइट? सो यू बेसिकली डिफाइन द टाइप ऑफ द फर्स्ट सोर्स, किसका नाम क्या है, राइट? व्हाट शुड बी द टाइप. लीनियर करते जाते हैं हम लोग. ठीक है. स्टार्ट वैल्यू कब हो, वैल्यू क्या हो उसकी स्टार्ट वैल्यू, जैसे 2 वोल्ट से 10 वोल्ट, स्टेप ऑफ वन, राइट? इंक्रीमेंट ऑफ वन. If you want to input some noise into your system, you can also input a noise source also over here, right? DC transfer. एसी स्वीपिंग. AC sweep. You have multiple options here. ठीक है. Octave, decade, linear, list over here. ठीक है. So it has everything, right, which we have done in PSpice. ठीक है. DC transfer. क्या लॉग वाली भी तो आती log sweep बोल रहा हूँ? है. हाँ, that is octave, decade. तो लोगों ने नाम इसको अलग दिए हैं. ठीक है. So decade is base of 10, right? Decade means 10, right? अच्छा जी. सो यहाँ पे बोले कि फर्स्ट रोज स्वीप करनी है आपने, सेकंड करनी है, थर्ड करनी है, कब से कब तक करनी है, किस स्टेप से करनी है, राइट? So you might need this in future sort of stuff, but this is not required here. But you should know कि है इसके अंदर option, right? सारे ये वाले. DC transfer, DC optimal operating point over here, frequency response भी इसके अंदर है, right? Also basically sweep at different frequencies. ठीक है. Make sense? So अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ ट्रांजिएंट. ठीक है. से डॉट ट्रान. ठीक है. इसका शॉर्टकट हमारे पास ए है. ठीक है. If you want to configure your analysis here, you just press A. ठीक है. You will hit this window. Or you can simply define directly also. उसको खोले बगैर press dot tran one. So it basically tells the simulation that we are doing a transient analysis for 1 second here. There is no step size here. We'll take the default step size. ठीक है. Make sense?
This can you can find efficiency also. You can basically do mathematical operations between the two graphs also easily. In PSPy you had to use built-in command, right? Mult की command, log की command, ठीक है? यहाँ पे you can write in command directly and does it automatically, ठीक है? You also find averages of the waveforms, ठीक है? By shortcuts, ठीक है? उसके अलावा you can see this is operation for, let's say if you have multiple windows open, you can arrange them vertically also, ठीक है? Side by side or up and down, ठीक है? Or you can basically have a popped sort of screen setup over here, right? Can zoom in from here, zoom out from here, fit to screen from here, right? You can also zoom out by this, by basically just using your two fingers, zoom out, or just scroll out. ठीक है? You can zoom out, zoom in from here. Hold the left click and you can drag also, right, left and right. It's simpler to use. ठीक है? Then you have, these are for wires. If you want to connect the two nodes for wire, you have this particular sort of tool here. This is for the ground here. This is for the voltage source here. Everything has shortcuts here. Okay, so it's pretty fast to draw a schematic here. This is for a resistor, and this is a capacitor, inductor, diodes, a component, right? Let's say if you want to bring in an op amp, right, or a MOSFET, so you can just go to component library. ठीक है? दिस इज फॉर योर नेट लेबलिंग होती है ना हमारे पास कि एक वायर के पॉइंट, लेट्स से दिस इज V1, द अदर पॉइंट इज P2, राइट? इफ यू वांट टू डू लेबलिंग हियर, दैट्स कॉल्ड अ नेट, ठीक है? सो यू कैन आल्सो डिफाइन नेट्स हियर लेबलिंग करने के लिए. यू आल्सो पुट टेक्स्ट ऑन योर डॉक्यूमेंट कि दिस इज अ सिमुलेशन फॉर क्लास D पावर एम्पलीफायर, ठीक है? आई कैन आल्सो डिफाइन द डायरेक्टरी ओवर हियर कि मैंने कहाँ से लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है इन माई सिमुलेशन, ठीक है? You can basically delete any component on your screen also from here. If you are a new person over here, so you have the toolbar to navigate, right? And this is for duplication here, control C से move mode के लिए. अच्छा, you can easily move the components around your screen, ठीक है? Then you have stretch mode also, you can stretch a component also, right? Make it smaller, bigger, ठीक है? You also undo your move by control G, right? Make sense till now? अच्छा, अब how can you do it faster? Let's say if I want to make inverting amplifier, right? So what is an inverting amplifier? सिग्नल को इन्वर्ट इतना करना। मुश्किल क्या है, तो कंफ्यूज हो गया. हाँ, सिग्नल को इन्वर्ट तो एम्पलीफाई क्या करता है? इन्वर्ट। एम्पलीफाई भी तो होता है. ये पढ़ा आप लोगों ने डीसी बन के अंदाज में पढ़ा ही, पढ़ा होगा आप लोगों ने. हाँ, ठीक है. क्लास से हम बता हाँ जी, सो आप बनाएंगे जरा आयशा, व्हाट इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर? याद नहीं है? खती रहो. इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. हाँ, क्लास। सब पढ़ा आप लोगों ने. ये इसी वन के अंदर पढ़ा है, इसके अंदर पढ़ा आप लोगों ने. अच्छा एम्पलीफायर स्ट्रक्चर बना। हाँ, स्कीमेटिक. You have done in IS. You have done this in EC1 also. अच्छा, आप बनाओ. क्लास ए एम्पलीफायर बना। हम्म. हम्म. कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर। ठीक है. बैटरी का कैपेसिटर है. नॉइस हाँ, ऑप एम्प कैसे बनाते हैं? ओपन। हाँ. ओपन का जो वो होता है सिंबल। हाँ, ये तो बीजेटी बनाया हमने. मॉसफेट इसका बना। नहीं ना, ऑप एम्प इस्तेमाल होता है ना. इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज दिस. क्या हो गया? सही। यहाँ पे इनपुट आ रहा है आपका वी है. अच्छा हो गया यूज कर ना। हम मैं यूज करके बना उसका। This is a V out. This is R. So how do you define the relation from output to input? बिना जो है ये Negative R over R minus. Right? यस। So let's make this, ठीक है? चलिए. अच्छा, so let's quickly bring in the source here. So hit V. So we get the voltage source here, right? For R, press, for resistor, press R.
क्या हो गया भाई? हाँ, रोटेट कैसे करते? गुड क्वेश्चन। कंट्रोल आर। ठीक है, तो रोटेट कर लिया आपने। एंड यू वांट टू प्लेस टू रजिस्टर, राइट? सो एक को ऊपर रखता है। नाउ कैन फिट बेसिक जूम आउट ऑल्सो, जस्ट फिट इनटू योर स्क्रीन, स्क्रॉल लेफ्ट। ठीक है, इफ यू वांट टू मूव एनीथिंग प्रेस एम। आई वांट टू मूव दिस सेटिंग टू टॉप लेफ्ट। ठीक है, एंड escape फ्रॉम द ऑप्शन। ऑलवेज escape आफ्टर you're डन। ठीक है, ऐसे में मूव करो तो एक पूरी इसको मूव कर रहा want to press something after pressing M, press a component which you want to move. है। हाँ, ठीक है, and then escape from the option. ठीक है, it shows some small symbol on the scroll bar also, cursor में कि आप क्या कर रहे हैं अभी, right? If you want to now bring in op amp here, यहाँ पे op amp का ऑप्शन नहीं है आपके पास, right? So just press P, P for parts, right? It shows you different parts which are available in your library. So find op amp chilies over here. Where do you see op amps? ओपीसी है। Right? So you can choose anyone. Let's choose LT1721। कहाँ पर है? LT1721। टू टू कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, सो दिस इज ऑप एम राइट नाउ। ठीक है, आपकी ऑप एम आ चुकी है। प्रेस हिक, बस लीव इट एट अ पॉइंट एंड देन प्रेस केप। ठीक है, तो व्हाट एल्स इज लेफ्ट? ग्राउंड। ग्राउंड के लिए प्रेस जी। सिंपल, राइट? इट्स इजी नेविगेट here. So now how do you make connections? You want to now basically wire them, right? So for wiring, you have W. Press W and click between two nodes, and then you can move around easily, right? If you see a wire stuck with your cursor, press W again. ठीक है, कनेक्शन में ऐसा ही नहीं हुआ। राउंड के लिए जी। तो सिंपल टू यू, राइट? इजी। वायर स्पीड स्पाइसी होगा। वायर प्लस आज है, जैसे आज है। यू हैव टू लर्न इट। अगर आपका लेट से वायर स्टक हुआ ना, लेट से इफ यू गेट, इसमें ये इनकी पूरी लाइनें आ रही हैं ना, बहुत कंफ्यूज। लेट्स यू लाइक यू गेट लाइक दिस ना, लाइन अच्छी है बहुत ज़्यादा, डिफाइंस की कहाँ हिट करी जाएंगे, ये देखो। तो वो है, यू नो कि यहाँ पे कट होना है यहाँ पे इसको। ठीक है, कंट्रोल जी, कदम। आई लव दिस सॉफ्टवेयर बाय द वे, व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग इट। स्टार्ट मुश्किल था, इट गेट्स ईजियर व्हेन यू नो शॉर्टकट्स ना। सो इट टेक्स अस सेकंड्स टू कनेक्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, अच्छा, ऑप एम्प ऑल्सो नीड्स सप्लाईज, राइट? सप्लाईज होती है हमारे पास, प्लस वी माइनस वी होते हैं, राइट? तो उसके लिए वी हैव टू ब्रिंग इन मोर सोर्सेज एट द लेफ्ट साइड। सो अगेन प्रेस वी एंड देन डुप्लीकेट। अच्छा, एक को हमने देना है नेगेटिव वोल्ट देना है, ठीक है, एक को हमने देना है पॉजिटिव वोल्ट देना है, राइट? सो यू कैन स्वैप द नेक्स्ट अनदर वन। देखिए, ये मैंने ग्राउंड कर दिया है। द मैजिकल थिंग इज ओवर हियर। ये देखें आप, उसके बाद ये मजे की बात है इसमें कि you just define nets and just call in the names over there. ये मेरे पास है v प्लस, लेट्स से। अच्छा, हाउ डू बिंग अ नेट? नेट इज अ लेबल, राइट? प्रेस एन, नेम इट, इट्स v प्लस। v प्लस, ठीक है। सो v प्लस को कनेक्ट करते हैं विद द पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स, एंड v नेगेटिव करते हैं विद द नेगेटिव वोल्टेज सोर्स, राइट? सो इट इज योर v नेगेटिव हियर। लेट्स से आई एम गिविंग इट +5 and -5, राइट? Now you can just simply copy the names, Control C से, press Control C and bring in V plus here, and plus again bring V negative here, right? So ऐसे आपके पास सप्लाई पहुंच गई, that's it।
Right now, wire them up. It saves time. It makes it more delicate. ठीक है, so now you have supplied your op amps. V plus is a label के 5 वोल्ट की सोर्स को which is giving me plus 5 here. So basically we have two sources here which are giving us plus 5 and negative 5, right? तो मैं लेबल दिए हैं कि this is V plus and the other one is V negative here, right? So connect the labels with the op amp here. So वो plus 5 यहाँ पहुंच रहे होंगे. आपने हमें 5 कैसे दिया? हाँ. 5 अच्छा, कैसे how दिया? do you put in the values of the voltage source here? Right click on the source. It takes a DC source value. You also put in the resistance which basically supply के अंदर होती है इसकी थोड़ी बहुत, ठीक है. You want to operate at almost realistic scenarios. You also put in the series resistance offered by a voltage source, battery or anything else, ठीक है. अभी फिलहाल I'm just giving it 5 volts. अच्छा, how do you swap it? Control R से, ठीक है. तो this is giving me negative 5, this is giving plus 5 here. आपने हमको ड्रैग कैसे किया था V प्लस V माइनस को? Press Control C and click on V plus. खुद ही आ जाएंगे आपके पास कर्सर पे. And drop it. You just right click on the voltage source, put in the value. इसकी मजे की बात यह है कि you can just have one voltage source. You can define the type. Is it a sine wave? Is it a triangular pulse? ठीक है, just from V. ठीक कैसे? है. कैसे करते हैं? Good question. Right click here. ठीक है. You see advanced option, right? Click advanced. You see के what source of voltage source you want to define it. A pulse source, a sine source, a triangular source. PWL हो गया हमारे पास. एक्सपोनेंशियल सोर्स हो हमारे पास. आई डोंट नो अबाउट SFFM. आई गेस ये रैम पे, पता नहीं क्या है. ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो अभी हम देंगे साइन बल्स. इन दिस यू हैव सम सेटिंग्स ये कि DC ऑफसेट 0 है हमारा. मेक द एम्पलीट्यूड टू बी 2. द एम्पलीट्यूड इज जस्ट द पीक वैल्यू, ठीक है. पीक वैल्यू हमारे पास कि. इसमें भी 30 की तरह अगर हमें कोई 2 मिली देनी है, 2 भी M लिखना है भाई इसमें हाँ हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि हाउ डू डिफाइन मेगा मिली मैक्रो. हाँ, बताता हूँ उसको. यस. अच्छा, देन फ्रीक्वेंसी कर लो 101 kHz कर लो. अच्छा, 1 किलो कैसे करेंगे? 1K बस. दैट्स इट. डिले देना है, गिव डिले 0. ठीक है, वी डोंट एनी फेज शिफ्ट ओवर हियर. अच्छा जी. तो डोंट डिफाइन थीटा हियर. फाई जस्ट बेसिकली डिफरेंस हियर. साइकिल्स इफ यू वांट टू वैसे स्टॉप इट आफ्टर सर्टेन साइकिल तो डाल दें, वरना छोड़ दें. ठीक है. अच्छा, मजे की बात यह है, यह स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ओवर हियर विच विल यूज इन योर फ्यूचर कोर्सेज. ये होता क्या है, राइट? इफ यू हैव यू लर्न अबाउट स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग, ठीक है, सो उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, राइट. अगेन, व्हाट गुड थिंग इज ओवर हियर कैन आल्सो इंक्लूड पैरासिटिक्स ओवर हियर कि सोर्स की रेजिस्टेंस, पैसिटेंस incorporated over here to have realistic analysis. Make sense? Yeah. So if you're done with this, press OK. Right? So it shows you sine 0 is basically the offset here, 2 is the amplitude here, 1K is the frequency here, and 0 is the delay here. ठीक है. So now how do you define? Let's say I want the gain. हाँ. 30 में अगर हम किसी कंपोनेंट को मूव कर दें, उसके बाद उसका वायर भी मूव करो। हाँ, इसमें नहीं होता. Just press M, move the wire, easy. You want to click on the component. ठीक है, now bring it back. मुझे Press. वायर भी फिर कट करना पड़ेगा। नहीं, वायर भी move करो। नहीं होगा ना. करें M करें. Use if you press M, it only moves the component, not the wire. नहीं हमें चाह वायर भी move हाँ, तो उसके लिए you have to select. You just press M. ठीक है, करना। easy. So how do you let's say you made a control Z accidentally, right? You want to basically redo your undo, but you want to go back. Control Y, I guess control shift Z, control shift Z. ठीक है, control shift Z. You want to undo your control Z. ठीक है, control shift Z. कंट्रोल जी को अंडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जी। कंट्रोल शिफ्ट Z. हाँ. ठीक है. अच्छा, नाउ लेट्स से आई वांट अ गेन टू बी ऑफ 10, सो मैं इसको कर दूंगा लेट्स से 100K, एंड मैं इसको कर रहा हूँ 10K.
Again, if you right click on the resistor, you can see कि power rating, you can define power rating also, define tolerance also. Again, including realistic simulations, right? So ये आ गया हमारे पास सेटअप पूरा, ठीक है. सो इट्स एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. अच्छा जी, अब लेट्स से आई वांट टू डिफाइन सम नोड्स हियर, ठीक है, फॉर चेकिंग कि मेरा इनपुट क्या है, मेरा आउटपुट क्या आ रहा है. सो आई कैन डिफाइन नेट्स हियर, राइट. सो लेट्स से आई डिफाइन दिस नेट एज वी आउट. ये मैंने वी आउट डिफाइन कर दिया. आई वांट टू डिफाइन दिस नेट एज वी इनपुट, राइट. So I have now two nets which I can analyze and see के how is my results. नेट का वो क्या था शॉर्टकट? N. बस वो। N. Simple, right? Let's say if you want to move your entire schematic, press M, select the entire schematic by double click, and then you can move around your schematic. ठीक है. There is one more benefit here, that is you copy the entire thing into another schematic directly. ठीक है. Press Ctrl N. ठीक है. And copy this Ctrl C. Copy this and that thing and just click your tab draft one. तो यहाँ पे पूरी schematic आ गई. समझ आया? खदीर देखा आपने क्या करा मैंने अभी? नहीं चलेगा। क्या? मेरा पाव कितने सिलेक्शन नहीं हो रही थी तो इस कंपोनेंट की कंपोनेंट सिलेक्ट की तो फाइल मोड है ठीक है चलिए ये भी समझ. अच्छा, have you seen this last thing बताया हुआ मैंने? You copy the entire schematic into a different new file also. पहले क्या करते थे पीस के अंदर, यू वांट टू क्या करते थे पहले? Was it possible in PSpice? Can you do this copy and paste into another file in PSpice? यस. कैसे करते थे? कॉपी बस करके पूरा सेलेक्ट करके कॉपी एंड पेस्ट. ठीक है, यहाँ पे जैसे ड्रैग ड्रॉप. ठीक है, देखिए कैसे. अगेन कंट्रोल सी, सेलेक्ट एंटायर स्कीमेटिक, कंट्रोल एन, आ गया. ठीक है. तो अगेन सेलेक्ट करिए कंट्रोल एन कर दिया. सेलेक्ट कंट्रोल. अगेन वापस देख लें लास्ट टाइम. ठीक है, कंट्रोल सी, सेलेक्ट द स्कीमेटिक विच यू वांट टू कॉपी, कंट्रोल एन, आ गया. ठीक है, इजी. अगेन डिलीट, डोंट सेव इट आउट. मेक सेंस? तो नाउ लेट्स एंटर द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर, दैट इज द सिमुलेशन. हमने बी प्लस एंड बी माइनस हमने डिफाइन किया वो भी नहीं वो आएंगे उधर. वो मैंने, हाँ, अगर डिफाइंड नहीं है उसके अंदर तो वो नहीं, वो आपको एरर देंगे कि दीज आर नोट नॉट डिफाइंड ओवर हियर. सो फॉर दैट यू कॉपी द एंटायर थिंग टुगेदर, राइट. Now let's run the simulation. For running, you can press this play button or Alt plus R, right? Alt R, it runs the simulation. Again, you can see multiple settings here. It can basically be displaying up and down, horizontally. If you want to make it vertically, that is more suitable for me. Vertical is easier to show, right? So you have the simulations, the schematic on the right, and the waveforms on the left. अभी दिख नहीं रही है? This one option, top left, center left. ठीक है, you can also swap them. ठीक है, मेरे हिसाब से आई आई लाइक द स्कीमेटिक ऑन द राइट, तो मैं इसमें यहाँ ले जाके इसको मैं कर दूंगा. ठीक है, अब यू कैन नॉट सी एनी वेव फॉर्म्स हियर, राइट. सो फॉर दैट यू वांट टू जस्ट प्रेस. इन पीस पर यू हैड टू पुट सम प्रोब्स, राइट. voltage differential probes, voltage probes, current differential probes, power probes. So यहाँ पे you just press at any point you get the waveforms. ठीक है, let's see the supplies first. So this is your supply +5 and this is your -5 supply. सिंपली ब्लू क्या दिख रहा है आपने? सही. I will have to put my charger or to die.
तीस का वाला पता नहीं सेकंड में और डाल देना ठीक है। नहीं मेरी विंडो खुली थी अब नहीं आ रही। तुमने दिया और वी कोड बनाया। ये बनाया। हाँ नहीं ना एंटर के लिए बनाया वी और वी कोड बनाना। अच्छा वो पीछे हो गया। You see what is तो कौन सा काम करनी है? बंद नहीं। हाँ, स्क्रीन पूरी ब्लू हो गई। मेरी भी होगी कोई सुन लो बंदो इस पे क्लिक करो। या जो फिटिंग है कैसे ब्लू हो गई? वो बहुत ज्यादा You might have basically selected some waveform को पूरे अलग। अच्छा नहीं, so what do you see? मेरी Try to analyze this. विंडोज नहीं है क्या है यार? यानी मुझे Select this. ये आपने define नहीं करें ना? Values। कंट्रोल जी दबाया तो बहुत हाँ, ज्यादा control shift से। Control shift जी खुद ही आ जाएंगे। अभी तो आपने बंद कर दी तो स्टाइल। अबे दादा। नहीं से Now try to explore your waveform plot resolution. What can you see? How can you zoom in? देखो जरा। Try to go। In case by that, basically bringing voltage probe, right? Differential probes, voltage probe, right? Or differential current probes, current probes, power probe, right? यहाँ पे डिस्प्ले आयरन नोड। हाँ, तो जहाँ नोड पे आपके नाम लिखे हैं उसके नाम लिखे हुए आ जाएंगे, राइट? यहाँ पे डिफाइन नहीं है नोड, वहाँ पर पे सी सम कन्वेंशनल नेम लिखे वी एन डबल 02 वी एन डबल 01 स्मॉल। यस ये कैसे भी हमारे बहुत से फिट बनवा रहे हैं। How can you zoom in? Just like you might that. ऐसे ही होगा उसको area that you want to read now उसको पकड़ like click on it and then just drag. अच्छा, यहाँ पे मैंने प्लॉट करा है पहले क्या? So how can you add a new plot? How can you add a new plot in PSpice? क्लिक करके You had to right click, होता नहीं था, बाबा करते रहो प्यार का ऐड प्लॉट, राइट? यहाँ पे जस्ट प्रेस बी, बस दैट्स इट, न्यू प्लॉट आ गया। बी, बी फॉर बॉल, राइट? And select this empty plot. Now I'm going to plot my input voltage here, right? Again press on the waveform sort of screen here, press B again here, and I want to get my V output here, right? So now you see some beautiful waveforms here, right? अच्छा, अब how do you save your settings कि if you open this simulation file for the next time, कि आपके पास waveform की plotting की settings सही सेव रहे हैं? मतलब let's say if you run the simulation you get the same settings of waveforms, तो press right click here, go to file and save plot settings. So whenever you open this particular file, when you run the simulation, you get these particular plots on your कैसे right click on the graph on the graph, go to file, save plot settings or control S. Which pro? वायर Pro, what pro? किसी नोट पे ठीक है, अब how do you zoom in? अच्छी How do you zoom in? Just basically double click and select a smaller area. Keep zooming in. ठीक है, ज़्यादा zoom हो गया।
ये इंटीग्रेट क्यों हो गया भाई? वाई इज इंटीग्रेटिंग हियर? एक मिनट रुको। जूम आउट तो कर एक करो। अच्छा, वाई इज इंटीग्रेटिंग ओवर हियर? एट द व्यू। हाँ, चॉपिंग हो रही है यहाँ पे। राइट, मेक सेंस। चॉपिंग क्या होती है? व्हाट इज चॉपिंग हियर? और एक मिनट। हाँ, व्हाट इज द व्हाट इज द सप्लाई वोल्टेज ऑफ द आईसी? प्लस 5 माइनस 5। व्हाट इज द इनपुट का पीक वैल्यू? प्लस 2 माइनस 2। व्हाट इज द गेन हियर? व्हाट इज द गेन वैल्यू? टू। गेन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? अच्छा 10। तो व्हाट इज 2 टाइम्स 10? 20। तो क्या होगा आउटपुट? 20 नहीं, आउटपुट इज आउटपुट क्या होगा? समझ नहीं है। So you have, say a variant, right? It's plus 2 input, minus 2. It's negative 2, right? And what is your supply ratings that the IC can maximum offer? Plus 5, negative 5, right? So what are you expecting in the output? It should be 20 plus 20 minus 20, right? समझ आ रहा है? ये मैंने फाइल में फिक्स किया सही है। यस। What is the R2 or R1 here? It's basically 10, right? यस। सबके पास V out upon V in is 10, right? यस। If we, what is the amplitude of your input? 2, peak value. So what should be your peak value of the output? 20। Plus 20 minus 28. What is supply की rating right now? मतलब वो मैक्सिमम 5 तक कर सकता है, 5 के ऊपर होगा तो चॉप हो जाएगा, इट विल सैचुरेट, राइट? दैट इज व्हाई आई कैन सी ओवर हियर इट गोस टू, it goes around 5 chops, right? Goes to 5 chops and goes to negative 5 again chops, right? Make sense? अच्छा। So if you increase the supply to, अगर if this IC can support 25, let's see. फिर वही लेना। Yes. अच्छा अगर एक और प्लॉट गलती से आ जाए उसको हटाने दें। Now we can see कि you have the sine waves here, right? Make sense? अब आ गई है? ठीक है? Plus 20 minus 20. I get inverted, right? Invert to V. Invert to V. Inverted delta है. Inverted के लिए होगा. ठीक है? अब जो असद ने बोला कि सर if we get an extra plot on the screen, graphing screen, how do we delete this? अच्छा, you can also merge the two plots easily. Double click on this and take it over here. ठीक है? For comparison. Let's say this plot is extra here. Press delete. You will see a scissor sign over here, right? Click here, delete हो गया, ठीक है? And if you want to delete a plot, click on that particular plot. Delete हो गया. Press escape to escape the option here, right? And again, में सेलेक्ट कैसे करेंगे कि वेदर वी आर सिलेक्टिंग द वोल्टेज और द करंट। हाँ, how do you plot the current here? If you click on the node, if you see this, this is for the voltage, right? रेड अच्छा। This particular thing is for the voltage here. If you want to plot the currents here, you have to click on the drag on the components here. So this is the current here, right? So current देगा ये, ठीक है? This is the current passing through the input side of the op amp, and this is the current in the outside side of the op amp. So click on the component for the currents, ठीक है? So current almost remains. अच्छा मुझे बताओ, करंट एम्पलीफाई होता है इन ऑप एम्प्स? Does is the current amplified in the op amps, or is just it's only the voltage? वोल्टेज Current remains constant. Current is constant problem. And I have this. अच्छा, it tells you current in this direction, ठीक है? It tells the current in this opposite direction. So if you want to get the current in this direction here, then just put a negative sign here. सही है? So you can easily do mathematical operations here. If you click on, let's say if I want to make it negative here, right click on IR2 and make it just negative. ठीक है?
So you see the opposite current going from point here to here. Does this point make sense? करंट जो आप मेजर करते हैं विल ऑलवेज टुवर्ड द लेफ्ट डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट if you want to get the current in this direction here just right click over here on the name and put a negative sign here so current will direction reverse current dot support I can component click on the component that is क्या करना है ignore that just be okay right out not that you are this ठीक है let's say you want to find the output power कैसे निकालोगे how do you find the output power let's say I want to delete these current graphs over here right I want to delete these graphs ठीक है just press on the graph name first then click on the plot delete हो गया ठीक है click on the name first and on the plot वो delete हो गया ठीक है now I want to find the output power here right so for that I have to plot both the graphs the voltage graph and the output current graph right and current have to be in this direction ठीक है अब how do I find power VI right so you can simply multiply these two graphs so right click here control X delete this graph and you can simply do multiplication operation here ठीक है so this is power right now power VI right नहीं लिखा दस so अब पहले आप क्या करेंगे okay just plot the V out first on the new plot get the current also जो आपको current आ रहा है ये आ रहा है ठीक है I want the current in the right direction here so I put a negative sign with the current here यहाँ तक करो पहले सारे and if you recall current का power graph is always positive or negative right for I square R अब V square upon R right so it's either up or it's either down you have to get the current what is the output current here cross it current I have to हाँ identical I have to इसमें cross हो जैसे हाँ अभी नहीं यही ना अच्छी राइट क्लिक किया राइट क्लिक ऑन द नेम करंट कंट्रोल है control हाँ कट इट कंट्रोल एक्स डिलीट दिस राइट क्लिक किया हाँ मल्टीप्लाई करो ठीक है गेट द पावर multiply by star स्टार बस राइट ओके ठीक है so this is your power over here make sense set so you want to find the average power also right you have a formula for average power k1 upon t 0 to t right p dt right so you take number of cycles take an average value ये जिसमें average power over here right so it's a lengthy process so इसके अंदर we have a very easy process एक और क्वेश्चन है कि EC2 में I remember you said to ignore the first three or first two days हाँ हाँ उसके बाद फिर देखना अगर यहाँ पे आई first three नहीं ये फर्स्ट थ्री नहीं है मैं जूम इन आगे किया जा सकता हूँ हाँ you can go आगे okay let's say मैं zoom करूँगा तो it gets very do fit to screen पहले and then at the end take the waveforms ठीक है so you are sure कि आपने at least 20-15 साइकिल स्किप कर दी you are at the steady state because that is in initially the IC is booting up it's in transient domain ठीक है after certain time it hits the steady state सारे parasitic जो effect होता है हमारे पास वो खत्म हो जाता है ठीक है so now you have the power just right click on this cut this name here delete this and right click over here just put star and then multiply ठीक है so this is your power over I should make sense right so what is power it's I square R or it's basically V square upon R right so you get the graph always in the upside right याद हो आपको A level integral के जैसे right if you plot I square R graph power graph is always positive right so इसकी average value अगर आपको निकालनी हो you have a formula for that right you can find the average value here directly just press control and hit on the name ठीक है
तो उसने आपको बता दिया कि इंडिविजुअल की वैल्यू ये आ रही थी हमारे पास। तो जब मैंने उसको मल्टीप्लाई किया टाइम लिमिट से, सो आई गेट दिस पावर हियर। मेक सेंस? Hit control and हिट राइट क्लिक, सॉरी कंट्रोल एंड क्लिक ऑन दैट नेम, control and then क्लिक ऑन द नेम। ठीक है, क्या है? right click. क्लिक करो, कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल दबाओ पहले, अपने क्लिक करो। अच्छा, I have to hold it. ठीक है, you have to hold control and then press on this particular name here, that's it। you see कि इसने यहाँ से लेकर इस साइड तक इसने इंटीरियर शेप and compute किया, right? So the average value in your unit generating over here, so you can see it has changed the unit also, huh? It has come into watts, so it knows कितना पावर निकाली, right? तो आप इसने आपको यहाँ से आ सकता है एवरेज वैल्यू दे दी, make sense? So it's easier to analyze over here. So this is your output power here. You can find input power from this same formula, from this same methodology. At this side here, can do P out of complete better efficiency also. Make sense? Easier to use it, right? So this is what you will use in your class amplifier, everything, right? You will plot, you will find averages, you will find output powers, you will find efficiencies, okay, so on and so forth, right? Make sense? ये जो You can apply the formula also by the way, ठीक है? x axis जो दिखा रहे हो सबकी सेम दिखा रहे हैं. किसकी? हाँ वो तो सेम है। आपने जूमिंग किया है यार, जूम इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। हाँ सही तो इस पार्ट में सारी वेवफॉर्म्स क्या आ रही हैं? सही सही. ठीक है। Just power, averages, efficiencies, what else? You have losses also, you can also compute losses, ठीक है? Let's say आपने resistor across loss निकालना है, you can find the voltage across the resistor, right? करंट तो पता है आपको, you can find that particular loss also, कि इस पार्ट पे इतना लॉस मेरे पास आ रहा था, ठीक है? Make sense? Any questions? समझ आ रहा है? Is it easier to use as compared to piecewise? थोड़ा सा। एनालिसिस में है, प्लेसमेंट में. एक प्लेसमेंट बहुत पुराना है, वहाँ पे you have to find, आपको आदत हो गई ना कि, तो मैंने स्टार्ट यूजिंग इट्स प्रीटी गुड। यू कैन आल्सो डिफाइन पैरासिटिक्स ओवर हियर, ठीक है? वहाँ ऑप्शन नहीं था आपके पास, हाँ. ठीक है? सो एनी क्वेश्चन? अच्छा, इफ यू वांट टू सी अ पर्टिकुलर वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प, बिकॉज आई हैव कर्सर्स ओवर हियर, ठीक है? हाउ डू यू गेट कर्सर्स? जस्ट प्रेस ऑन दैट पर्टिकुलर प्लॉट। सो ये प्लॉट हमारे पास ग्रे हो गया, राइट? सो जस्ट प्रेस सी, गेट कर्सर, राइट? So let's, you can drag and drop also. So I get this cursor here and press C again, you get multiple cursor also, ठीक है? So cursor 2 मेरा यहाँ पे आ गया। I want to find the frequency, right? So this is one cycle here. So it tells me the frequency also, ठीक है? It is exactly almost 1 kilohertz. मल्टीपल पर्सन की तरह. Press on the plot again, press C again. Okay, C2, control C2. Click on the revenue C1. यहाँ पे करिए, now I done. Okay, press 4 to the time and C1. हाँ, करना भी। Yeah, I haven't changed it to 25. This is 25, so I will give it. Make sense? So you can also find frequencies of your waveforms. क्या आ रही है? Can you find frequency? निकाले frequency? Yes sir? नहीं. निकालो. Press on the plot. Any plot. Let's say input plot. यहाँ पे click करो. Press C. Bring the cursor at the top. PK. जब यहाँ पे 1 लिखा है तो बस यहाँ पे 1 लिखा आता है, आप press करो. हाँ बस ना. Drag it. Almost center पे, हाँ. Click here. Click here. Anywhere else. हाँ करो करो. दूर यहाँ पे. हाँ press C again. This is C2, speak below. This is one wavelength. Alright. You see the delta T, you see the delta V, and it also gives you the frequency also, right? ठीक है? Does it show frequency से उस पॉइंट पे या फिर बाकी सब पे देख? हाँ, you can watch for different points also. जो अभी आपने कर्सर से प्लेस करें different points पे, ये उसका डिफरेंस निकाल के आपको फ्रीक्वेंसी बताया उस पॉइंट से, ठीक है? It finds delta T, you can see over here. You have cursor 1 की values, दैट इज इसका टाइम वैल्यू ये है, इसकी वाई वैल्यू ये है, ठीक है?
कर्सर टू की x2 वैल्यू ये है t2 एंड y2 वैल्यू ये है। इसने हॉरिजॉन्टल डिफरेंस निकाला है बेसिकली। इट डिड t2 माइनस t1 हियर एंड इट डिड y2 माइनस y1 हियर, राइट। फिर इसने जो t है, हमारा डेल्टा t है, उसका क्या है, रेसिप्रोकल किया है। इट ऑल्सो गिव यू स्लोप ऑल्सो ऑन द बॉटम राइट, यू कैन सी के इट हैज डन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t ऑल्सो, ठीक है। सो इट कैन गिव यू मैनी थिंग्स ओवर हियर। तो आई बिलीव दैट it is a large time for you guys to make a non-inverting amplifier of gain of 20. You have to make a non-inverting amplifier of gain 20. ठीक है? Then छुट्टी. If you have questions in the meanwhile, you can ask also. अच्छा, we have missed one thing, that is how to be import an IC. So we'll do that on Monday, inshallah, ठीक है? That will take time to understand. So now you have learned all of the basic which you need to run a basic simulation, right? So if you don't have any part available in Google, let's see. वहाँ पे you see all the libraries over there जो by default available हैं. So you have to define the what. So you have to design it. So just make a two-page report of your schematic and your waveforms. So also you have to find power output power. So just submit those two pages as assignment on the Teams, ठीक है? The plot should look like this. Okay, you should have the supply voltages, input voltage, Vout, and then your power graph. Okay. Supply voltage V plus or V minus. You see the top green line at 25, water blue line at negative. Yes, initially ये इंटरटेक एम्पलीफायर से नॉर्मल साइड में साइड में लगे इनपुट बात यार ठीक है ये फिर कट हो रहा है क्या कट हो रहा है हाँ तो वो तुम्हें सेट करना पड़ेगा ना वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज कैसे डिस्कस करेंगे क्या वो कैसे प्रैक्टिकल नहीं मतलब क्या वैल्यू फिक्स कर हाँ राइट निकल कर दिया वैल्यू क्या तो डीसी वैल्यू इसकी 25 सेट होती है ना तो हम चेंज कर सकते हैं ना इसकी डीसी वैल्यू 25 हाँ हम चेंज कर
उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या टाइम वेट करेंगे।